Hello everyone, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, we are going to see how to find the atomic mass of the elements. Atomic mass trick, how to find it. So let's start. These are the elements, these are the symbols of these elements. These are the atomic number and we have to find the atomic mass. So there is a trick to find it. So let's start that trick. First is odd number. For odd number, what we have to do, we have to write first atomic number multiply by 2 plus 1. ओके, atomic number को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देना है. एंड फॉर इवन नंबर, atomic number first, then multiply by 2, only up to this. So let's start finding the atomic mass of these elements. So first element, hydrogen, and the symbol is H. Atomic number is 1. So how to find the atomic mass? So for the hydrogen, these two formulas are not you can say ये इस पर लागू नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इसका atomic mass भी 1 ही होगा. ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन में है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 ही होगा. आपको बस ये याद रखना है. उसके बाद हमारा सेकंड आता है हीलियम. हीलियम का सिंबल He, बिकॉज अगर हम H लेते तो H हाइड्रोजन और हीलियम सेम हो जाना था, इसलिए हमने क्या लिया, सेकेंड नंबर ले लिया इसका. फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और जो सेकेंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है. आई होप यू ऑल नो दैट. देन द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2. How to find atomic mass? First atomic number is 2 multiplied by 2 because it is a even number. Okay, even number क्या है? Atomic number multiplied by 2. Atomic number क्या है? 2 multiplied by 2 is 4. So what is the atomic mass of helium? That is 4. Next is lithium. Lithium का symbol Li. Atomic number is 3, so find the atomic mass. Now 3 is a odd number, means first क्या है, atomic number, that is 3 multiplied by 2 plus 1. So 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7. So what is the atomic mass of the lithium? That is 7. Then our next is beryllium. Now symbol is Be. Atomic number is 4. तो हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास? इसके लिए ये एक इवन नंबर है, पर इसका जो फॉर्मूला है वो ऑड नंबर का अप्लाई होगा. मीन्स 4 एक इवन नंबर है, फिर भी इसका जो हम अप्लाई करेंगे ऑड नंबर वाला अप्लाई करेंगे. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. ये सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स के लिए है. ठीक है, बेरिलियम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ऑड नंबर वाला. सो व्हाट इज ऑड नंबर? 4 into 2 plus 1. So answer is 4 2s are 8. 8 plus 1 is 9. Next is boron. Boron symbol is B and the atomic number is 5. So 5 is a odd number. Odd number के लिए क्या होता है? Atomic number multiplied by 2 plus 1. Atomic number is 5 multiplied by 2 plus 1 is 5 2s are 10 plus 1 is 11. So what is atomic mass? That is 11. Then our next is carbon. Carbon's symbol is C. Atomic number is 6. So what is the formula? It is a even number. So 6 into 2 is 12. So atomic mass is 12. Next is nitrogen. Nitrogen symbol is N. Atomic number is 7. So इसके लिए क्या होगा? बेरिलियम का इवन नंबर था, उसके लिए हमने ऑड नंबर वाला अप्लाई किया. अब ये ऑड नंबर है तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? इसके हम अप्लाई करेंगे इवन नंबर. ओके, ये भी एक मीन्स आप इन 3 हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सिंबल्स वैसे ही हैं सारे. ठीक है, एटॉमिक मास. सो 7 into 2 is 14. I hope you all are understanding it. Then is oxygen. Oxygen symbol is O and the atomic mass is 8. 8 is a even number, so 8 multiplied by 2. It is 16. Okay, this is 16 atomic mass. Then is fluorine. Fluorine symbol is F and the atomic number is 9. So 9 is a
Yes, odd number. So what is the formula? 9 into 2 plus 1. So 9 into 2 is 18 plus 1, 19. Then is neon. Neon symbol is Ne. Atomic mass is 10. So what is the formula? It's a 10. So even number 10 into 2 is, that is 20. So these are the first 10 elements. So let's move to our next 10 elements. So the next 10 elements are, first 11th is here, sodium. So sodium symbol is Na and the atomic number here is 11. So how to find? 11 is a odd number, so atomic number is 11 into 2 plus 1. So 11 2s are 22 plus 1 is 23. Simple. The next is magnesium. Symbol is Mg and atomic number is 12, and 12 is a even number. So what is the formula? Atomic number into 2. Atomic number is 12 into 2 is 24. So 24 is atomic mass of magnesium. Next is aluminium. Symbol is Al and the atomic number is 13. So 13 is a odd number. So what we will do? 13 into 2 plus 1. 13 2s are 26 plus 1, 27. So it is the atomic mass of the aluminium. Then is silicon. Symbol is Si and the atomic number is 14. So 14 is a even number, and for the even number, atomic number into 2. 14 2s are 28. Then our next here is phosphorus. Symbol is P and the atomic number is 15. 15 is a odd number. So what is the rule? 15 into 2 plus 1. 15 2s are 30 plus 1, 31. Then sulfur. Symbol is S and the atomic number is 16. So 16 is a even number. Even number. Atomic number is 16 into 2. That is 32. Then for the chlorine there is one exception, and the atomic mass you have to just learn at 35.5. It's not accurate. It is in the decimal form. So what is the it has exception means ये rule जो है odd number और even number का इस पे accept नहीं करता. ठीक है. So what is the chlorine atomic mass? That is 35.5. Then is argon. ये भी exceptional है. इसका जो 18 है, 18 सा what is 18 to सा, so it is a exception. और इसका atomic mass is 40. ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा. सो थोड़े सी मीन्स एलिमेंट्स हैं जिनका आपको याद रखना होगा, बाकी तो आप प्लस ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट इज पोटेशियम. सिंबल इज के. अटोमिक नंबर इज 19. सो 19 इज अ ऑड नंबर. 19 into 2 plus 1. 19 2s are, that is 38 plus 1, 39. So next is calcium. Symbol is Ca. Atomic number is 20. It's an even number. So 20 into 2 is 40. So now you're thinking that इसका भी atomic mass 40 और इसका भी atomic mass 40 है. Yes, इन दोनों का जो atomic mass है that is 40 only. Change नहीं है, कोई point नहीं है, 0.5 नहीं है, दोनों का atomic mass 40 है. So these are our first 20 elements. ठीक है. So hope you like the video. Please, if you understand my video, please like and subscribe to our channel for more such videos. Thank you for now.